So, Namaskar, all of you. So, we will continue with previous year questions of GS paper. Odisha Civil Service Mains 2021 रा questions discuss करूछु GS paper 1 रा. तो काली आमे question 1 to 5 discuss करथलु 10 marker उडा. आजी 6 to 10. So, आज हमरो section 8 सरी जिवो जोडा कि 10 marker question उडा. Okay. So, just to repeat, काली जो हमु class रे कहितली सेटा आउथर repeat करछि. आपण माने जो माने एई वर्ष मेंस देबे ओके ओपीएससी तो बाहर करछि कि से एबे मे बी आजि काली भितरे कीज आसी जो आपन प्रीलिम्स रा आंसर कीज आ ताको आपण मैच कर दे परिबे. सो जो माने एई वर्ष पे ही फोकस करूछंती आ ऑलरेडी नोट्स आपण बनै छंती टेक्स्ट बुक रु तो बहुत भलो कथा. अदरवाइज एबे आउ टाइम नहीं कि आपण टेक्स्ट बुक रु नोट्स बनेबे रेडीमेड नोट्स आपण को नवा पे पड़िबो. रेडीमेड नोट्स भितरे एबे जदि हमें देखिबा सबुटु भलो प्री कंपाइल्ड नोट्स रहउची फिजिक्स वाला रो ओनली आईएस रो. ओके इधर तांकोठु आपण परचेस कर दे परिबे इफ यू वांट द कलर्ड बुकलेट्स और अदर सोर्सेस रु भी आपण बुक स्टोर्स करिकर मिलुची जेरॉक्स शॉप्स रे मिलुची. ओके अदर ओपन प्लेटफॉर्म्स रे भी मिलुची बट तार 2023 जो संपूर्ण एडिशन टा से तांकर बाहर करछन दैट इज क्वाइट गुड. पूरा प्री कंपाइल्ड अछि. ओके खाली ओडिसा पार्ट टाको छाड़ देले बाकी सब आपण मिल जिवो. ओडिसा पार्ट यू नीड नॉट वरी बिकॉज़ पूरा बहुत भलो रे क्वेश्चन आंसर फॉर्म रे कंपाइल्ड हेकी हमरो दशहरा परे सेटा आसी जिवो. सो दैट यू कैन आल्सो मु जतले सेटा बाहरिबो मु जणै देबी आपण सेटा. ओके तो ताको छाड़ देले ओडिसा पार्ट टाको छाड़ देले बाकी सब आपण सेथुरु मिल जिवो. स्पेशली एथिक्स टा बहुत ही भलो करछि सेतर. ओके बहुत ही कंसाइज वे रे पूरा बहुत प्रॉपर ये रे देछि. तो एनीवे तो आ जो माने ए वर्ष पे प्रिपेयर करना थी नेक्स्ट ईयर की ता नेक्स्ट ईयर पे प्रिपेयर करछंती यू शुड गो फॉर टेक्स्ट बुक. आपण टेक्स्ट बुक पढंतु टेक्स्ट बुक निजे नोट्स बनातु. ओके डू नॉट यू नो बेसिकली डिपेंड ऑन प्री कंपाइल्ड नोट्स. ओके निजर नोट्स बनाबाटा निहाती दरकार. So let us come to the questions. So sixth question hela Panchayati Raj institutions are level players in development of a country. In the light of above sentence, examine the structure and function of Panchayat Samiti in Odisha. Okay. So basically question ta single statement question bhi hai parta, single line question bhi hai parta कि discuss the structure and function of Panchayat Samiti in Odisha. Okay. Plus जेहेतु से statement ता देला are level players in डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री तो ता ऊपर भी कंक्लूजन रे कि मझिरे आपन को लिखिया पड़ियो केमिति सेटा हेल्प करछ. ओके सो एटा बहुत बड़ बड़ इंट्रोडक्शन देछि. एते बड़ इंट्रोडक्शन में दे परियानी. इंट्रोडक्शन 2 लाइंस मैक्सिमम हबो. ओके सो कि सेटा गोटे यू नो इंटरमीडियरी पंचायत समिति ता इंटरमीडियरी बिटवीन ओके जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत राइट. तो सेही सब जिंसोटा यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव ए लुक. ओके एटा थरे पढि दे परिबे. आ भितरु जोटा कि निहाती भाबरे आपण को लिखिबार अछि सेटा हला ए टेक्निकल डिटेल टा. ओके बिकॉज़ इट इज गवर्न्ड बाय कैन से ओडिसा पचारछि ना ओडिसा पंचायत समिति एक्ट 1959 एटा मेंशन मो आंसर रे रहबा निहाती दरकार. ओडिसा पंचायत समिति एक्ट 1959. ओके तापरे आसिला स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत समिति जोटा कि से तर एक्चुअल आंसर रे से क्वेश्चन रे पचारुछि. सो ऑल सरपंचेस ऑफ ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक, MPs and MLAs representing the block, some directly elected members of Zilla Parishad from the block, some officers of the block like the BDO. Okay, आउ भी जति आपण एटी पढिबे. ओके एक्सटेंशन ऑफिसर्स एंड ऑल से तार ऊपर देछि. ओके एटी बहुत गुड आंसर हेछि. इवन ग्राम पंचायत ऊपर भी देछि सेगुडा हमरो किछि दरकार नहीं. ओके ग्राम पंचायत सेगुडा लिखिया दरकार से पंचायत समिति पचार यू जस्ट स्टिक टू व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड. सेति की भी लिखिबा डिफिकल्ट हे जिवो. ओके 7 मिनिट तापर से पचारछि फंक्शंस विषय. ठीक अछि तो डेवलपमेंटल फंक्शंस हला. ठीक अछि रोड्स हॉस्पिटल्स एडा सब से बनेबे. ठीक अछि गवर्नमेंट जो स्कीम्स अछि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स अछि स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स अछि ताको इंप्लीमेंट करिवे. देन सोशल वेलफेयर फंक्शंस रोछि तांको. ओके फॉर एग्जांपल फॉर एवरीवन स्पेशली फॉर द वल्नरेबल कैटेगरीज वुमेन हेले डिप्रेस्ड क्लासेस हेले चिल्ड्रन हेले तांको पई ओके तांकर जेमती बेटरमेंट हो सेटा भी से देखिबे. देन इकोनॉमिक फंक्शंस भितरे तांकर फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओके तांको केमती प्रॉपर यू नो क्रेडिट माइक्रो क्रेडिट करिका मिलिबो सेगुडा भी से माने. ओके दैट इज अंडर देयर इकोनॉमिक फंक्शन. देन रेगुलेटरी फंक्शंस सो तांको डोमेन रे जहा जहा रेगुलेटरी फंक्शंस तांकर अछि जहा पावर अछि फॉर एग्जांपल मार्केट्स फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. इन विलेज लेवल फेयर्स आर यू नो वेरी पॉपुलर. ठीक अछि तो सेगुडा सब आंका अंडर रे आसुछ. देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन राइट.
So coordination and addressing any administrative issue, okay, at their levels, and resource mobilization to some extent, okay, local taxes, fines, so that some kind of financial autonomy ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ successful ହେଇନି, okay, but that is a different question, okay, but that also we have to write about resource mobilization, okay। So conclusion टा properly देखिबे, especially जोड़ा underline ହେଇଛି ସେଇ parts गुड़ा आपनको okay focus करिवार अछि। In conclusion, in context of Odisha, the Panchayat Samiti plays a pivotal role in decentralizing power to the grassroots levels, ensuring democratic participation in decision making and bringing about development at local level. They act as a bridge between Gram Panchayat and Zilla Parishad, and their function span a wide range of areas crucial for integrated development of rural areas of the state. Okay, जो माने प्रथम थर लिखुचंते आंसर्स करिका तो आपण फोकस करंतु इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन केते सिंपल हबो और केते डायरेक्ट हबो, ठीक अछि। गोटे दी लाइन रे केमति मु मैक्सिमम जिंसटा कन्वे करिवि। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ पब्लिक हेल्थ इन ट्राइबल एरियाज, okay, in India. Comment on the health seeking behavior of tribal people in India. So एठी इंडिया कथा पचारछि, but then जो भी क्वेश्चन हो गोटे ओडिसा रो एग्जांपल अपन दे देले बेटर, ओके। तो एठी जेमति देइछि दिस इज द परफेक्ट इंट्रोडक्शन ना, गोटे दी लाइन रो इंट्रोडक्शन हवा कथा। प्रीवियस क्वेश्चन रे जेमति देइथिला इंट्रोडक्शन टा सेमिति हमरो दे परिबेन, okay, time होने 150 words से सारी। Tribal communities in India constituting around 8% of country's population have distinct health challenges arising from socio-economic and geographical factors. तो कौन consider होइछि तो दीटा पार्ट अछि क्वेश्चन रो। फर्स्ट हला पब्लिक हेल्थ इन ट्राइबल एरियाज ता स्टेटस कोन हेबे, आउ health seeking behavior of tribal people of India. The first asila status ta limited healthcare infrastructure, it is improving but still then as compared to non-tribal regions it bahut hi what a serious issue. Then high disease burden, various reasons are there, cultural reasons are there, accessibility issues are there, ठीक है। So tribal areas record higher, okay, prevalence of diseases like malaria, TB and malnutrition, okay। So malnutrition, especially the PVTG groups, okay, they suffer high rates of malnutrition। किछि वर्ष आगु अपन जानथिबे इवन जो मैंगो कर्नल्स खाइ कि भी, okay, जो आंबो टाकुआ, okay, ताकु भी खाइ कि हमरा malnutrition डेथ सब होई छै, okay। इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट ताकु देई पारुनी कि कोन गवर्नमेंट रो बहुत स्कीम्स अछि और गवर्नमेंट इवन जाई कि ताको डोर स्टेप रे बहुत जगह रे दिया होछि, बट देयर आर सर्टेन ट्राइब्स जो माने ड्यू टू कल्चरल रीजंस एंड ऑल से माने मॉडर्न हेल्थ केयर एगुड़ा एते एक्सेप्ट करंत, स्पेशली पूरा रिमोट एरियाज रे, ओके। सो लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। So either they are not aware, and even if they are aware, okay, their cultural practices, certain norms tankara achi, okay, se guda se mane that does not allow them to, okay, uh, you can say accept the modern medical system, okay, tankara traditional way of healing achi tankara। तापरे आसीगला तो एथरा में चारटा पॉइंट देलु फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ऑफ ट्राइबल पीपल, रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल हीलर्स, ओके। तो एटा आपण छत्तीसगढ़ रे देखिबे, मध्य प्रदेश रे देखिबे, झारखंड रे देखिबे, ओडिसा रे देखिबे। ओडिसा रे एग्जांपल त हमें नै छु एठी, ओके। तो तांकर कोन ना सिटी तांकर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ऊपर से बेसी बिलीव करंत। डिलेड मेडिकल अटेंशन, वेरियस रीजंस आर देयर, ओके। से माने कोन ना पूरा लास्ट मोमेंट रे जाय कि हॉस्पिटल रे पहुंचू जेतल ट्रेडिशनल हेल्थ केयर से माने जा जोथरे बिलीव करंती सेडा फेल हबो, ओके। So delayed medical attention, then financial constraints, okay। So government ताको पई बहुत जिंस प्रोवाइड करिछि, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट स्टिल देन, okay, जेते बेले access to finance, financial status, for example से गोटे ताको नै कि गोटे पर्टिकुलर जगह को जिबार अछि हॉस्पिटल पाखरे नाही, ओके। तेणु सेई जगह रे कोन होछि ना ताको ट्रांसपोर्टेशन हरिका दरकार, ऑल्दो गवर्नमेंट एम्बुलेंस प्रोवाइड करूछि, बट देन implementation level रे बहुत जगह रे देखा जाउछि कि there are lot of gaps, okay। So financial constraint, then cultural barriers, हमर ओडिसा रो डोंगरिया कंट्स कर एग्जांपल से देछि, okay। So basically they have that, they believe in their own system of medicine, से माने सेथरे बेसी कंफर्टेबल, तांकर एते बिलीफ नाही, ओके, एते ताका विश्वास नाही मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ऊपर। डिस्ट्रस्ट ऑफ आउटसाइड इंटरवेंशंस, तेणु फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिटी जाई कि किछि गोटे प्रोजेक्ट करिवो, ओके। तो जोटा कि हम होम साइंस रे आउ केते गोटे ऑप्शनल्स रे एक्सटेंशन एजुकेशन अपन पढुचंती,
तो सेठी गोटे मेजर प्रिंसिपल हैला यू हैव टू टेक द लोकल लीडरशिप इनटू द कॉन्फिडेंस सेठिकार जो लोकल लीडर्स ए केस रे जो ट्राइबल लीडर्स माने ठीक अछि से माने जे कि सेटा बुझेले से माने प्रॉपर सेटा बुझी पारे ओके लोक माने सेटा मानिबे अदरवाइज आपण सीधा जने कि गवर्नमेंट ऑफिशियल गला स्पेशली जे कि नॉन ट्राइबल तो इनिशियली से मानकु यू नो त से मानको रिजेक्शन रेट ता बहुत ही हाई रहइबो ओके सो linguistic barriers so language of communication that is also one other problem okay so with the health scenario in tribal areas of India including states like Odisha has seen improvements there remains a significant gap compared to non-tribal regions okay addressing the unique challenges of tribal health requires an integrated approach okay blending modern healthcare with traditional wisdom ତାଙ୍କର ଯୋଉ wisdom ଟା ଅଛି traditional ସେଇଟା ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେଇଟା you know it's not important कि सेटा भी बहुत ही important ଆଉ केते केते जगह रे सेटा modern medicine को भी टक्कर देछि okay so it has to be a harmonious blending of both okay तो एई पार्ट टा अंडरलाइन करी काहे ना एटा important पार्ट टा एटा भी आपण अंडरलाइन करिवे आंसर रे integrated approach okay which requires the blending of modern healthcare with traditional wisdom तांकर जोटा knowledge base टा ताको आपण डिस्कार्ड कर दे परिबे okay next question 8 before going to question 8 जो माने ए वर्ष मेंस में प्रिपेयर करछन 2022 पई so we have already started our online batches okay आरो डिटेल्स में आगुरु देइथिली जस्ट मु खाली तो हमरो अराउंड 6 hours classes रोची okay 4 hours offline and 2 to 4 hours पुनी online भी सेटा रोची okay आउ एटा वैलिडिटी आरो रोची लाइफ टाइम जोटा ऐप रे okay लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस सब गुडा आपन को रहउची मेन जिंस को रहउची एठी आपन मल्टीपल ओसीएस रैंक होल्डर्स आपन को हेल्प करछंती ओके दे आर द फैकल्टीज फॉर एग्जांपल जे आंसर राइटिंग क्लासेस नउचंती से ए वर्ष टॉप 10 भीतर 2021 रे टॉप 10 भीतर रहचंती राइट कोन कोन कवर होची कोर्स रे जीएस1 माने ऑप्शनल छडा बाकी सब कवर होची जीएस1 2 3 4 कंपलसरी इंग्लिश ओडिया ओके और एसए ठीक अछि एटा टेस्ट सीरीज कथा मु कोनी दिस इज ए प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जोटी की पढ़ा हबो क्वेश्चन आंसर फॉर्म रे सब गुडा पढ़ा हबो इट्स नॉट अ टेस्ट सीरीज एथर इंक्लूडेड अछि okay test series is included in this right so exam oriented teaching in question answer form आउ एथरे आपन को हार्ड कॉपी रे भी मटेरियल मिलिबो ओके जोटा की ओडिसा स्पेसिफिक रहइबो बाकी तो जो मटेरियल ओडा मु कहली आपन फिजिक्स वाला रो फॉलो कर परिबे जोटा की मो हिसाब रे सबटु बेस्ट मटेरियल एबे ओसीएस पई मु यूपीएससी कथा कहूनी ऑल्दो ता मटेरियल टा एक्चुअली यूपीएससी पई बट माने तार कंटेंट को देखिले सेटा एनी स्टेट सिविल सर्विस में बहुत ही बढ़िया हिच ओके सो एथिक्स पेपर एथरा को गोटे मेजर गोटे चेंज हमर रहइबो ओसीएस पई ओके तो एथिक्स पेपर जो नउचंदी अगेन से भी आपनकर ओसीएस रैंक प्लस यूपीएससी मेन से देचंती दिथर विथ वेरी गुड मार्क्स इन एथिक्स ओके तो ये कोर्स रे आपन टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहउची एज सच भी टेस्ट सीरीज हमरो किछटा ओपन टेस्ट सीरीज भी हबो ठीक है सो if you are not joining also no problem सेथरे भी आपण ओके टेलीग्राम चैनल रे आ गुटे डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी हेची सेथरे भी जॉइन कर परिबे सब रिसोर्सेस सेठी भी शेयर हबो ओके एटा भुवनेश्वर क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासरूम टा आपनकर दशहरा वैकेशन पर स्टार्ट हबो ओके 30 तारिख रो एंड ऑनलाइन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन ठीक अछि एटा तार स्ट्रक्चर रोची 8 टा रु 12 टा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन माने ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ ओके रहइबो एथरे जो माने ऑफलाइन आसिया पे चाहउछे ऑफलाइन आस परिबे जो माने ऑनलाइन करा भी चाहउछे ऑनलाइन कर परिबे तापर 4 टा रु 8 टा 9 टा रु 11 टा सेठी ओनली ऑनलाइन सेटा रहइबो फी स्ट्रक्चर हमर रोची जो माने ऑनलाइन नेबे 5000 और जो माने क्लासरूम रे नेबे सेमको पई 7000 रोची ओके आ ऊपर जदी किछि आपन डाउट्स होची यू कैन कॉल द ऑफिस ओके जो नंबर टा टिकर रे जाउची किंबा मते डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर परिबे 9437002210 रे नाउ कम टू क्वेश्चन 8 हाउ इज कम्युनलिज्म ए थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन एनालाइज तो एठी कोन नेशनल इंटीग्रेशन को केमिति से थ्रेटन करूची ता माने तारो जो कॉन्सिक्वेंसेस अछि सेटा नेशनल इंटीग्रेशन को केमिति ओके माने डेंजर रे पकोची से आपन को जत्ते पॉइंट्स रहइबो नेशनल इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव रो रहइबार अछि okay so again one or two lines introduction communalism marked by extreme allegiance to one's own community and promotion of communal interest over national ones poses a significant threat to unity and integrity of a nation okay first division it fosters division
ठीक अछि तो ये मु हेली एई धर्मर एई कम्युनिटी रो ओके एई कास्ट रो ये सब रहला ठीक अछि देन इट प्रोवोक्स वायलेंस ठीक अछि बहुत गुडे राइट्स हमर हेछि राइट जो जिनस पई हेत हो एठी फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल देला 2002 गुजरात राइट्स ओके सो जदि गोटे यू नो एमिकेबल गोटे कंडीशन थांता एनवायरनमेंट थांता ताले जिनसटा एस्केलेट करना थांता एटा स्टार्ट केमती हैला जो साबरमती यू नो एक्सप्रेस रो जो बगी रे जो अटैक प्री प्लान्ड अटैक करकी सेठी लोकन को मरा हैला तो एटा इंटेलिजेंस फेलियर भी हैला ओके जदि भी हेई गला इमीडिएटली सेठी स्टेप्स नबार थिला कि जे परपेट्रेटर्स तांको धरा हबो से बहुत लॉन्ग केस चलला ओके तांको सब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तांको मैक्सिमम ऑफ देम गॉट ओके एक्विट भी हेचंदी के जण राइट बट सेटा माने स्टेट जदि इमीडिएट एक्शन नहीं थांदा ताले आगु को जिनसटा बढ़ी न थांदा बुझि परले तो व्हाटएवर बी द रीजन जदि सिचुएशन सेठी भलो थांता और इमीडिएटली स्ट्रांग स्टेप्स निया हितांता ताले ए सिचुएशन हे पर न थांता ओके किंबा जदि ओवरऑल सिचुएशन प्रथमरु भलो थांता गोटे एमदी इंसिडेंट हे गला ओके वन ऑफ इंसिडेंट काइना सोसाइटी रे मैक्सिमम पीपल आर पीस लविंग लॉ अबाइडिंग पीपल किछिटा एक्सट्रीम एलिमेंट्स रहिबे सबुठी रहिबे एमिति दुनिया रे गोटे भी देश आपण बाहर कर परनी जो माने जो जगह रे मन नाहंती सबुठु अछन इंडिया रे हो जो देश आपण देखन को जगह रे टिके अधिक अछन को जगह रे कम अछन ओके तार गोटे पॉजिटिव एग्जांपल हम नहीं परिबा ए जो एथरक जो संबलपुर रे जो इशूटा हैला that also had the potential of blowing up to a communal right को किछि भी but immediately सेटा को गवर्नमेंट ओके आउ सेठी जर अथॉरिटीज ताको प्रॉपर स्टेप नै कि स्टॉप कर ओके जिए दोषटा करिसिला ताको जहा दर ओके एज पर लॉ ताको पनिशमेंट मिलला ओके आउ इवन प्रिकॉशंस भी निया होछ फॉर एग्जांपल दशहरा रे से माने जो विसर्जन जो पूरा माने पूरा मेढ को जो विसर्जन करती जो प्रोसेशन टा सेटा अलाउ करा है अदर रिचुअल्स आर अलाउ बट से जो प्रोसेशन टा कहना जनरली कोन हो सेडी सो प्रॉब्लम स्टार्ट हुए बुझ पर सो प्रोवोक्स वायलेंस राइट जदी भलो हार्मनी जो जगह रे अछि ओके सेठी आपनकर कोन होची ना जदी भी वन ऑफ इंसिडेंट किए गोटे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट बदमाश लोक किए गोटे कोन कला ओके ताहले सेटा एते फ्लेयर अप हबनी कायना लोक माने को भितरे पर्सनल लेवल रे एमिटी अछि ओके सो प्रोवोक्स वायलेंस नेक्स्ट पॉलिटिकल मैनिपुलेशन व्हिच ऑलवेज हैपेंस ओके सो बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ठीक अछि तापरे स्टाइफल्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस राइट सो एटी एग्जांपल देछि भद्रक ओडिसा रे बहुत ही पुराना कथा से कहै छै ओके एबे कहया करे ओडिसा इज वन ऑफ द मोस्ट ओके पीसफुल स्टेट्स with respect to this communal violence and all out taro reason that is one of the main requirements ki proper investment ଆପଣଙ୍କ state को आसीबो ଆପଣଙ୍କର जो प्रकार रो violence हो political violence हो कि जो प्रकार जहा भी अलगा violence हो जदि ଆପଣଙ୍କ state रे सेटा अछि बडो investment केबे भी आसीबो you see what has happened to bengal गोटे टाइम रे one of the most industrialized states थिला okay if you talk about pre independence but आफ्टर दैट इवन जेतले बीसी रॉय थिले तांकर चीफ मिनिस्टर सेतबेले भी बहुत यू नो इंप्रूवमेंट होतला तांकर ओके साइंस एंड टेक आउ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेटर ऑन जिंसो तांकर पॉलिटिकल कल्चर जो चेंज हला सो नाउ द थिंग इज दैट सेठी बहुत बड़ो ये आसीबा पई यू नो पांच तरह भाबे पड़छि अनलेस दैट कल्चर चेंजेस ओके सो स्टाइफल्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस दैट इज वेयर ओडिसा स्कोर्स ठीक अछि दैट इज वेयर ओडिसा स्कोर्स कि एठी रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अछि पीस अछि एठी पॉलिटिकल वायलेंस नाही एठी यू नो जो माने सब अपन बाहर रहिथिबे बेंगलुरु हो हैदराबाद हो सेठी सब पिक्युलियर प्रॉब्लम्स अछि ओके माने सपोज यू गो फॉर माने अपन रेंट पई खोजिया पई जिबे बाहर तो तांकर सब माने बॉम्बे रे अलगा इशू एठी ओडिसा रे स्पेशली लेट्स से हमें भुवनेश्वर रे कहबा कि संबलपुर रे कहबा कि राउरकेला रे कहबा एठी से इश्यूज हमरो टोटली नाही ओके सो गोटे एंगल रु तार बहुत हिस्टोरिकल रीजंस भी अछि आपण हिस्ट्री ऑफ ओडिसा पढला बेले विल डिस्कस दोस थिंग्स सो स्टाइफल्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस ओके देन इरोड्स ट्रस्ट गोटे कम्युनिटी रो आ गोटे कम्युनिटी ऊपर ट्रस्ट रहबन ठीक अछि सबल से भलो कामटा भी कले ताको जेमती टिके ना ई कोन फुनी पछरे किछ एजेंडा अछि बोते ए लोक भाबे
ठीक अछि. It challenges the secular fabric. Okay, so amara constitutional norms ja अछि, constitutional values ja अछि ताको सेटा challenge करूछि. Influences social dynamics. Okay, कौन social dynamics? ए आउ बी कम्युनिटी भितर क्लैश है बस भाई ए वाला कहले आमे बी को बॉयकॉट करू ना ता दुकान रू किछि किनिबू. ओके ना ता संगे किछि आउ रिलेशन रखिबू ए टाइप रो बहुत जगह हुए एटा. फॉर्चुनेटली एठी नाही ओडिसा नाही. ओके, but many places even in many developed places mo na nuni किछि states रो जो बहुत ही developed से state रो. ओके, सेथरे भी ए जिंसो अंडर करंट टा पूरा रहउछि. लाइक यू नो पीपल लिटरली चेक ये दुकान कहार. ओके, ताठु मु नेबी कि नहीं किनिबी कि नहीं जिंस. फॉर्चुनेटली एठी ओडिसा रे लोकन मानसिकता टा सेमती हेइनी. ओके, बिकॉज तार भी बहुत रीजंस अछि जोटा कि हमें कल्चर रे पढिबा. वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज द कल्चर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ओडिसा रे प्राय जेते राइट माइंडेड लोक थांती ऑल ऑफ देम आर ओके वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. को गोटे लेवल रे से माने लॉर्ड जगन्नाथ को भक्ति करते. Okay, so he is one of the biggest unifiers of the Odia people, right? को माने for example if you say that माने icon of Odisha किए, okay, there is only one icon of Odisha, that is Lord Jagannath. Okay, anyway, so it influences social dynamics. Okay, social fragmentation से तर रहबो. Then misrepresentation of history. राइट, तो एथरे कोन ना सो जो फेक जिंस उडा फेक न्यूज मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री जाको हमें कहू कि अल्टरनेटिव हिस्ट्री जाको आउची. ओके, से सब जिंस उडा आसी. राइट, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री. देन रेडिकलाइजेशन. सो राइट माइंडेड लोक भी जी एक्चुअली गोटे रैशनल लोक ताको सब बेले आपण एई जिंसटा देखिले से एक्सपोज हला एई जिंसटा को. सो फाइनली कोन हबो ना सी भी रेडिकलाइज्ड हो जिवो. बहुत एमती एग्जांपल्स अछि. एबे नुवा ट्रेंड कोन आउची सेल्फ रेडिकलाइजेशन. आगुरु जो ऑर्गेनाइजेशंस माने ओके प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस माने बैंड जो माने हिचंत. राइट, तो से माने का ट्रेनिंग दियो गोटे ट्रेनिंग सेंटर खोलो एबे सब ऑनलाइन हो जाउची. ताको सेल्फ इंडोक्ट्रिनेशन किबा एई केस रे सेल्फ रेडिकलाइजेशन को आउची. मु खाली वीडियोस देखि कि लिटरेचर पढी कि ऑनलाइन रे मु सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो जाउची. ओके, तापरे मार्जिनलाइजेस द माइनॉरिटी. तो जो जगह रे यू नो इट इज कंसीडरिंग दैट द मेजॉरिटी ओके जदी किछि atrocities करूची minorities ऊपर. ओके, तो it marginalizes the minority. से माने तापरे lot of changes will take place. For example, housing. Okay, in many states सेठी कोन होना पर्टिकुलर कम्युनिटी रा लोक को आमे घर दबुनी. से जीए भी हेइथौ से यू नो बड़ फिल्म स्टार भी हेइथौ आम सोसाइटी रे ताको मिलिबन. ओके, आउ किते किते जगह रे यू नो डिफरेंट रीजन सब अछि. ओके, कि ताको आमे पसेबन ताले सी तर जीवो कोठी सी तापर खोजिला ठीक अछि ताले मो कम्युनिटी रो लोक जोटी अछन मु सेठी रहबी. तो घेटोइजेशन स्टार्ट होला. गोटे घेटो रे से रहले. ए घेटोस जो आपनकर रहउची जेमति कि से गुजरात रोड रे हमें कहबा जदी नारोडा पाटिया रे जा हला दैट इज बिकॉज ऑफ घेटोइजेशन. सेठी इमिग्रेंट लेबर्स माने थिले. ओके, गोटे ही एरिया रे थिले सेटा गोटे घेटो थिला. तो अटैक करबा सुविधा से माने एका संगे रहउचंती तो ठीक अछि गोटे यू नो ताको अटैक करी हबो. यदि स्प्रेड आउट हिकी रहबे commonly, okay, sabu community sabu jaga rochen, it becomes very difficult. Okay, so it marginalizes the minorities. Conclusion kon debe? By emphasizing divisions and fomenting distrust, it is antithetical to the spirit of national integration. Okay, for a diverse country like India, which is rich tapestry of cultures. Tapestry kon cloth, it's a cloth basically. Okay, जोड़ा गुड़ा हुए, right? That is a tapestry of culture, religion and ethnicities. Combating communalism is essential to maintain unity and diversity. Okay, next question number 9. Assess the personality profile of deprived students, classes students in Indian society. Okay, personality profile पचाउची means जे deprived classes रा students अछंती. एठी deprived classes से कहूची. Okay, scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and others also. Okay, जो माने स्पेशली लेट्स से एबल्ड अछंती तांकर कथा भी से कहूची. Okay, students from deprived classes in India have distinct personality profiles
shaped by socio-economic constraints, historical injustices and cultural experiences. एटा बहुत important. ओके गोटे लाइन रे आमे लिखि देलु कि कोन कोन पई तंकर ए पर्टिकुलर प्रोफाइल टा डेवलप हेछि फर्स्ट हला रेजिलिएंस ठीक अछि सो मेनी एग्जांपल्स ओएस रे तो बहुत ही एग्जांपल्स हमर अछि खाली ओएस मो सब एग्जाम्स रे सब फील्ड ऑफ लाइफ रे अपन देखिबे एई जो पर्टिकुलरली से कहउची डिप्राइव्ड यू नो ग्रुप रो सेठी रेजिलिएंस बहुत अधिका थाए ठीक अछि जहा हार्डशिप हैला तथापि आमे पढिबु ओके किंबा जहा भी खाली तो आमे कहबानी कि एठी सब स्टूडेंट्स पचार ठीक अछि तो स्टूडेंट्स तेनो आपन से हिसाब रे बट कॉमन लोक भी देयर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल ओके जो माने पढ़ी पार नांती बट बहुत ही सक्सेसफुल से माने हेचंती एही डिप्राइव्ड ओके कैटेगरीज रु बाय देयर शेयर हार्ड वर्क ओके तापरे हाई एस्पिरेशंस सो तांको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देले ओके से माने भी दे आर आल्सो यू नो बहुत जगह रे करी की भी देखैचंती इन डिफरेंट फील्ड्स ओके इनहेरेंट स्किल सेट्स so many have unique skills rooted in their indigenous cultures such as traditional arts and crafts even sports Odisha is a hub of sports अपन जे देखियो हमरो जत्ते मेजर स्पोर्ट्समैन अछंती इंटरनेशनल रेप्यूट रो ये मैक्सिमम ऑफ देम कम फ्रॉम द ट्राइबल बेल्ट ओके बिकॉज ऑफ कल्चरल रीजंस और प्रथमरु ही से माने फिजिकली बहुत टफ थांती राइट सो then cultural richness so they bring a rich tapestry of cultural heritage and diversity into mainstream insecurity and inferiority so due to the social system okay किछि किछि जगह रे से जिंसटा थाए फॉर एग्जांपल लेट्स से गोटे पिलाटे गोटे रिमोट एरिया रु से आसी जी ओके बहुत भलो स्टूडेंट से गोटे कॉलेज को आछि पढिया पई गोटे मेजर कॉलेज को आछि मे बी भुवनेश्वर रे हो कि कोठी गोटे मेजर सिटी के आछि सेठी नॉर्मली बाकी पिला माने केमती ता से बिहेव करंती ओके सेटा भी गोटे बड़ इश्यू गोटे एग्जांपल देली एमती सब यू नो फील्ड्स और डोमेन से एमती एग्जांपल आपण पाई परिबे देन दे आर अडैप्टिव okay because they are excellent problem solvers kaiki excellent problem solvers from the beginning you know tankara you know they are solving different types of problems real life problem solving okay so they are quite adaptive then empathy ठीक अछि एथिक्स रे पढुछन आपण सिंपैथी एम्पैथी कोन डिफरेंस है निजे से माने बहुत गुडे सिचुएशंस फेस करचंती तो जेहेतु निजे फेस करचंती से केबे भी एटा चाहिबेनी कि सामना लोक सेही टाइप रो असुविधा फेस करू सो एज ए यू नो से जो भी डोमेन रे से रहिले जो भी पोस्ट को गले कि जहां भी काम कले generally you will find that they are empathetic okay then commitment to community once they have achieved a particular place से माने सब बेले चेष्टा करिवे कि मो कम्युनिटी रे मते जो फैसिलिटीज मिली पार नथला सेटा मो कम्युनिटी किंतु मिलु सो कमिटमेंट टू कम्युनिटी dependence on peer support okay so due to limited resources they often rely heavily on peer support and group studies for academic pursuits ठीक अछि एबे ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल एगुडा सब भी हेल्प करूची provided they have the okay hardware required for that then hunger for opportunities if they are given opportunities they have shown excellent results sports गोटे बहुत बढ़िया तारा एग्जांपल ओके गवर्नमेंट बहुत सेथरे इन्वेस्ट कले प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देले एबे देखंतु ओके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमरो आसुची ओके हॉकी तो गोटे हॉकी छडा भी एबे ट्रैक एंड फील्ड रे भी ओके बढ़िया रिजल्ट्स आसुची सो द पर्सनालिटी प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन टा बुझिबार अछि से पर्सनालिटी प्रोफाइल कथा पचारला the personality profile of students from different classes in India including regions like Odisha is a mix of resilience adaptability cultural richness coupled with challenges stemming from socio-economic backgrounds recognizing and nurturing their potential can lead to significant societal advancements okay so last question a section ro 10 ta question thila okay this is the last question discuss the importance of conservation of heritage sites in India importance of conservation ठीक अछि काहे की कंजर्व करिवे तार सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस ता कोन सो हेरिटेज साइट्स इन इंडिया आर सिंबल्स ऑफ इट rich history diverse culture and ancient civilization okay conserving them is pivotal for various reasons like preservation of history सेटा बहुत important example हमें एठुई नै परिबा लाइक रेड फोर्ट ओके किबा एठी हमरो सन टेम्पल एट कोणार्क at the living testimonies to India's historic timeline so preservation of history then cultural identity okay so for example
आमे बाली यात्रा एबे सेलिब्रेट करबा ठीक अछि कार्तिक पूर्णिमा एंड आफ्टर दैट सो सेथरे कोन ना हमरे वी आर मराइनर्स ओके वी आर सी फेयरर्स एंड वी आर लेट्स से हमरो कल्चर रे सेटा अछि okay so cultural identity then educational value so these heritage sites serve as open air classroom so you go to any place okay for example let's say take a winter region we can think of that जेहेतु हमें हिस्ट्री ऑफ ओडिशा पढुछु हिस्ट्री ऑफ ओडिशा रे टेंपल आर्किटेक्चर ऊपर गोटे क्वेश्चन आछी जा भी बेसिवियस पर एथर तो पूरा प्रोमिनेंटली देइछि सेटा ओके सो हमें पढुछु कि हां एटा हला फर्स्ट भुवनेश्वर ग्रुप ऑफ टेंपल्स ठीक अछि भुवनेश्वर रे भी जे जन्म होइछि लोक जे कि अराउंड 20-22 इयर्स रही गलेनी भुवनेश्वर रे से माने भी प्राय जाई कि देख नथिबे जोटा कि ताको 15 मिनिट लागिवो राइट सो ए जो हेरिटेज साइट्स ओके दे आर लाइक ओपन एयर क्लासरूम्स you go to Mukteshwar temple or Parshurameshwar temple okay or the first Bhubaneswar group जोटा मु कहली Shatrughaneshwara Bharateshwara Lakshmaneshwara temples old Bhubaneswar रे okay से जा बही रे लिखा हिची सेटा ते निज आखिरे आपण देखुछंती त आपण इजीली सेटा बुझी पारि फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू Parshurameshwar temple okay सेटा सेही मुक्तेश्वर टेंपल कॉम्प्लेक्स रे ही अछि मुक्तेश्वर टेंपल गोटे साइड रे और Parshurameshwar temple आरो साइड रे से गार्डन को क्रॉस करले आपण पहुंचबे सेठी गोटे पॉइंट हला कि इट्स ए शिवाइट टेंपल ठीक अछि आयुधटा कोन थाए आपण को त्रिशूल थाए जेते सब बड़ शैव मंदिर रे आयुध इज द त्रिशूल ट्राइडेंट सेठी किंतु लिंगमटा थिला आयुध ऊपर लिंगम लागिथिला ताकू एबे कळाई कि तळे रखाई सेटा बही रे पढिबा आ सेठी देखिबार डिफरेंस बहुत अछि ओके द इवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इनिशियली कोन देयर वाज नो हार्मनी बिटवीन द गंडी एंड द बाड़ ओके जो आपण को देउलो पोर्शन टा ओके सेथरे नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस वुड बी डिफरेंट सपोज लेट्स से त्रिरथ देउलो थिबो ओके तीनटा प्रोजेक्शन थिबो किंतु किबा पांचटा प्रोजेक्शन थिबो पंचरथ आ तळे बाड़ लेवल रे सेठी त्रिअंग बाड़ थिबो मींस डिवाइडेड इनटू 3 अपर पार्ट डिवाइडेड इनटू 5 vertical projections lower part divided into 3 vertical projection बाड़ोटा त्रिअंग बाड़ देखो लेटर ऑन सेठी हार्मनी आसी गला तो पंचरथ ऊपर पांचटा और बाड़रे भी पांचटा ओके सो एटा देखिले आपण प्रॉपर्ली ताको बुझी पारिबे ओके तापर नेक्स्ट को आसीला टूरिज्म प्रमोशन ओके एग्जांपल्स देइची इकोनॉमिक बेनिफिट्स सो लॉट ऑफ टूरिस्ट विल कम तो बहुत गुडे एंसिलरी ओके आपनकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपनकर खोली जिवो सेठी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ओके आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन तो सेथरे विजुअल आर्ट्स हला कि आपनकर परफॉर्मिंग आर्ट्स हला बहुत जगह सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आर इन और अराउंड दीज यू नो हेरिटेज साइट्स लेट्स से हमर मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल हला कोणार्क डांस फेस्टिवल हला सेमती सब स्टेट्स रो अछि okay then environmental conservation right so must also include green spaces promoting biodiversity ओडिसा रे सेटा बहुत ही भलो छै आपण जो भी माने मंदिर को जानतो एबे मु जो कॉम्प्लेक्स कथाडा बे कहिली मुक्तेश्वर टेंपल ओके देन परशुरामेश्वर टेंपल आउ भी गोटे टेंपल मुक्तेश्वर साइड रो छै फॉरगेट द नेम ओके सेटा एते प्रोमिनेंट नो बट इनफैक्ट मुक्तेश्वर टू बड़ किंतु एते यू नो I don't remember the name okay but सही complex रही अच्छी and there are lot of lawns in between ठीक है since that कोची environmental conservation in fact more people go to sit in the lawns okay local लोग जो माने rather than going to the temple itself okay then it promotes research okay academic and archaeological research ପାଇଁ then moral responsibility last point टा हला एटा गोटे हमरो moral level रे से कहला कि हमको ताको प्रिजर्व करिवार अछि ओके हमर एंसेस्टर्स करो सेटा हमको गिफ्ट हमको प्रिजर्व करिवार अछि ना कि सेठी जाई कि कुकुर बुलेबी राइट पेट डॉग को नै कि सेठी ताको यू नो रिलीव करिवो से राइट सो इट इज माय एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मते सेमती भाबी कि चलियार अछि ठीक अछि मोर गोटे छोटिया घरटे भी अछि जोटा मो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अछि तो ता पई मु कोर्ट को पळी परिबी किंतु एटा हमर कलेक्टिव प्रॉपर्टी ओके पूरा जाति रो कलेक्टिव प्रॉपर्टी तो ता पई हमकु केते स्ट्रांग होबा दरकार okay so conclusion the conservation of heritage sites in India including those in Odisha is not just about preserving the past it is about valuing our cultural identity boosting economic avenues and ensuring stories of these sites
continue to inspire future generations. Okay, so section A, that is the 10 questions of 10 marks, सेटा हमें कंप्लीट कलु. नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा 15 मार्कर जोड़ा. ठीक अछि, जो पे हमको 10 मिनिट दिया होछ. तो एगुडा ए 10 टा क्वेश्चन मते 7 मिनिट रे सारिबार अछि. ओके, the best way is you stop the video, take down the points. Okay, कि तार फोटो उठे कि आपण रख परिबे जा भी जेमती. ओके, and you try to write निज हिसाब रे ताको सेही पॉइंट्स आउरी बेटर पॉइंट्स जोटा आपण ऐड करि परिबे ताको मिसे कि लेखंतु. ओके, so I wish you all the best for your preparation. Next class रे हमें we will be discussing about the section B, 250 words 15 mark questions. Okay, 5 टा करी सेटा. So each paper पई हमें जी 3-4 sessions दबा. Plus I'll also be starting today with home science. Okay, so 6 o'clock रे live हबो सेही एटा. Live बने the since एटा आपनकर you will get the link okay at 6 o'clock. So home science रो 2021 paper 1 रो प्रथम दिटा क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन टा तो कॉमन क्वेश्चन टा. ओके, जोथरे कि 4टा बिट्स थाए. आउ सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट 1 and 2 we will be doing. ओके, एठी गोटे जिंस मन रखिबे, डायग्राम्स जो जगह रे दरकार आपन करिया पे पड़ियो. ओके, जो जगह रे दरकार अछि डायग्राम सब जगह रे जबरदस्ती आपन डायग्राम करिया दरकार. जो जगह रे डायग्राम करिया कथा आपन डायग्राम कर पारे. ओके, ज्योग्राफी रे से सब ये रे आपन डायग्राम कर पारे. ठीक अछि. इंटरनेशनल रिलेशंस करिका हला एथरा कथा सेटा ये नहीं, बट स्टिल देन से सब क्वेश्चंस रे यू कैन जो जगह रे आपन रगला कि रेलेवेंट. फॉर एग्जांपल एठी से पचाउची. ओके, health seeking behavior of tribal people in India, status of public health in tribal areas. एठी मु जबरदस्ती गोटे फिगर करि पारि, बट इज इट रिक्वायर्ड? नो. ओके, ताले छाड़ दवा. जोटी फिगर टा वैल्यू एडिशन करिवो सेठी मु फिगर देबी. एमती नाही कि 20 टा क्वेश्चन रे 20 टा फिगर करिवि. ठीक अछि. So keep that in mind. So we'll stop here then and we'll continue this in the next session. Okay, namaskar.